That's that, but it's actually not. It's Style just है. one fabric. Shitile. Acha. So hello. Hi. What so are basically, friends? I kind of wanted to speak to this about like everybody and on camera, but I was just a little confused. Okay, how do we begin this? Because the topic is very sensitive, Oh my god. but it means like a lot to me. But I want to know like your thoughts on it. Like I'm just gonna start with Sundas. Sundar, what are your thoughts on? Your thoughts on यार नहीं वहाँ से smart लोगों से start So करो. basically, I was having a conversation with Zoya, and Zoya was telling me about her journey in TV, and she was speaking about it, and she was opening up and being fearless about a lot of things. And I was like, can you say all of these things on the podcast? Because you know sometimes you have to be politically correct. And Zoya's like, yeah, man, I don't care. I would love to speak because it benefits like a bigger audience. So why not? So our conversation was about skin tones and Oh, how इसमें dark skins are unaccepted in Pakistan. And not only that, it's not just public perception, it's what the media companies are controlling and kind of keeping an eye on कि अच्छा अगर कोई लड़की dark skin की है, कोई लड़की सांवली है, तो उसको सामने भी नहीं लेकर आना. So it's kind of not to each his own in this case. It's more like, oh, you're dark skin, all right, get out. We're gonna bring somebody who has a fair skin. And that is what her experience has been. So I kind of want to talk to you about it. Like, what's up, man? Go on. Well, सबसे पहले तो Popcorn. नहीं देखिए the thing is channels chase this. Channels गोरी लड़कियों के पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी जो आवाम है उनको उनको चाहिए भी गोरी. हाँ एक जगह आप कहते हैं कि आप जो है वाइटनिंग क्रीम्स को आप इंडोर्स ना करें. एक जगह अब अगर आप कोई लड़की काली आ भी जाती है स्क्रीन पे तो उसे कहते हैं गंदी मोटी इस नहीं तरह की पसंद करते, सारी. अच्छा. उसके बाद जब आप पतली और गोरी लड़कियां ला रहे हैं तो आप उन्हें कहते हैं प्लास्टिक ब्यूटी. ज़्यादातर आवाम नहीं करती लेकिन मोस्टली है बिकॉज यू करते हैं. कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेगेटिव फर्स्ट. अगर आपके पास कमेंट्स आ रही हैं जो 70 अच्छी हैं उनके अंदर से जो 5 हैं वो बुरी हैं, आप उन 5 पे कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे, Exactly. राइट? तो वो फिर आपके अंदर ना एक वो कॉम्प्लेक्स का शिकार आपको बना देती है. और कंपनीज़ को रेटिंग्स चाहिए होती हैं तो कंपनीज और चैनल्स ये देखते हैं कि अच्छा जब हम कोई गोरी और पतली लड़की लाते हैं उसको ज़्यादा चाहे एक्टिंग आती हो या ना आती हो वो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, राइट? बहुत हमारे यहाँ ऐसी भी हैं डार्क स्किन लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपना नाम बनवाया है, अच्छी एक्टिंग की है, बट इट्स रियली हार्ड टू बी एक्सेप्टेड लाइक दैट बिकॉज आई साइंड अ फ्यू प्रोजेक्ट्स. तो मैं टर्की की ट्रिप के बाद से काफ़ी टैन होके आई एंड आई वेंट टू द कंपनी टू री साइन इट एंड एवरीथिंग क्योंकि डेट्स आगे पीछे हो गई थी. देयर लाइक ये आपने क्या किया, आप इतनी टैन होके आ गई हैं. एंड दे सजेस्टेड दैट आई गेट वाइटनिंग इंजेक्शंस डन. तो देखिए अगर कोई और लड़की आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. ऑब्वियसली लूजिंग वेट इज़ अ डिफरेंट थिंग. चेहरा मुंह पे मोटा आता है, आपको करना पड़ता है बिकॉज आपकी पब्लिक ज़्यादातर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं नहीं करती है. करती. हाँ. लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं जो इतनी थिक स्किन नहीं है, बहुत सी लड़कियां जो सेंसिटिव हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, वो अपने आप को बिल्कुल एक अच्छी लाइट में देखना बंद कर देती है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे सजेस्ट किया था एंड आई थॉट अबाउट इट एंड आई ऑलमोस्ट डिड इट बट देन अ फ्रेंड ऑफ माइन शी सेज बेसिकली ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है ये अल्जाइमर्स का क्योर होता है. इफ यू हैव एन अल्जाइमर डिजीज एंड यू गेट दैट इंजेक्शन इट सप्रेसेस योर मेलानिन प्रोडक्शन. सो मेलानिन ये जो हमारी ब्राउन पिगमेंटेशन. हाँ ब्राउन पिगमेंटेशन होता है जो उसको करता सप्रेस है. करता है. So I was just a bit like very you know disappointed and then I'm like अच्छा ठीक है फिर मैं जाने देती हूँ प्रोजेक्ट. तो लाइक नहीं आप थोड़ा वेट कर लें, वाइटनिंग इंजेक्शन लगा लें. मैंने कहा नहीं इट्स ओके, आपको काली लड़की नहीं चाहिए, मैं आइवरी कलर की बेस नहीं लगाऊँ. यू नो ये बहुत इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का मुझे बहुत सामना करना पड़ा था. तो तुमने भी वो जाने दिया प्रोजेक्ट? हाँ वो मैंने जाने दिया. Good, yeah. And I would say like you completely boycott the people, the production and the direction. Yeah. जो भी उस कंपनी के लिए काम करें, like totally, because this kind of behavior, this kind of mindset shouldn't be allowed in the open like We this. are a brown skin nation. हमें अपने कलर से बड़ा वो होना चाहिए. क्या कहते हैं, मेरी उर्दू खत्म हो गई है. Proud, you should. Proud, you should be proud. This is who you are, and you should be proud of who you are, and that's हाँ. it. तो मैंने अपनी एक पिक्चर अपलोड की जिसके अंदर मैं बहुत टैन थी और जिस चीज़ की नीचे कमेंट्स आई हुई थी कि वो फल्ला काली लग रही हो, चुड़ैल लग रही हो, ये क्या हुआ कि क्यों काले होने में क्या बुराई है? लाइक हम पैदा ही इस तरह के ब्राउन स्किन हुए हैं. सूरज ने अगर हमें थोड़ा सा काला कर दिया इट्स कम्प्लीटली फाइन. बिल्कुल. एम्ब्रेस इट. ये इस किस्म का कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में पैदा हो चुका है और अगर कोई औरत या अगर कोई स्टार उससे एम्ब्रेस कर ले वाइटनिंग ब्रांड को तभी वो मारे जाते हैं. आई रिमेंबर कि एक ये लड़की है
एक्ट्रेस है, वो बहुत जानी पहचानी है, शी इज़ वेरी लव्ड। उसकी एक पुरानी पिक्चर्स आ गई जिसके अंदर उसने स्लीवलेस भी पहना हुआ था, जिसके अंदर वो काली भी थी, उसका होंठ भी छोटा था, और सबने उसे कह दिया कि हाँ ये प्लास्टिक है, पहले इतनी काली इतनी बदशक्ल थी, कहती स्लीवलेस नहीं पहनती, और अब देखो क्या कर लिया भाई, किसी हालत में तो खुश हो जाओ। अच्छा आपको वो नहीं चाहिए था, तो उसने क्योंकि उसे एक्टिंग का शौक है तो वो उस हद तक पहुंची जहाँ पे उसे ऑडियंस एक्सेप्ट करे, तो बी हैप्पी इन दैट। हाँ, जजमेंट दोनों हर चीज़ों में हो रही है। पास करना, पास करना, माइक पास करना। हेलो। हाँ, Yeah. मुझे लगता है कि जिन लोगों का माइंडसेट ही है ना कि आपको एक चीज़ नहीं पसंद आ रही, उसको दूसरी चीज़ भी नहीं पसंद आएगी। अगर उसको आपके अभी रंग से इशू हो रहा है, फिर उसको आपके वेट से इशू होगा, क्योंकि उसके दिमाग में चीज़ें एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है कि अच्छा हाँ ये No, I चीज़ don't है। think I don't think that's what it is. So that's like we literally have, like, as a nation, we have a lot of problems. I understand, but like we do have complexion phobia. है Yeah. वो A बिल्कुल kind है, of मैं a- बिल्कुल One कह रही हूँ वो more है। thing is- हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि वो चीज़ है और वो हमारे दिमागों में बिठाई हुई भी है, और कुछ लोगों में ये खुद है ये चीज़ कि अच्छा हाँ नहीं हाँ, नहीं लेकिन पसंद। लेकिन in saying कि हाँ है बस, this is like form of a endorsement कि जो हम लोग ना जाने अनजाने में कर देते हैं. Literally people should stand up against it and kind of say कि यार what the hell, like how can you have this सोच. Even if our parents, like I know our parents are still of that mindset, the baby boomers specifically, जो कि ये सारी बेसिकली एक आप इसको कह सकते हो कि ये जो इस माइंडसेट के जो लोग हैं जो कि कहते हैं अच्छा काला इज़ बुरा, गोरा इज़ बेटर. लाइक दिस वाज नेवर द केस बिकॉज वी आर एज अ नेशन, टेक्निकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, दिस शुड हैव नेवर बीन द केस बिकॉज दिस इज हु वी आर. Yeah. Literally, sahi hai. So what happens is after the media revolution, when you became, when you started seeing different faces and started exploring different nations and you started seeing the beauty in other people, you kind of just suppressed your own beauty, and this is like the smallness of your own mind. That's the thing, In a way. we should embrace our own culture. अगर हम पंजाबी बोलते हैं so we should be proud of it. मुझे याद है अक्सर आंटी कहती है बेटा पंजाबी नहीं बोलनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों? इट इज़ आवर लैंग्वेज, ठीक है ना, आप बोल रहे हैं, बी प्राउड ऑफ इट. हमारे पास पठान भी हैं जो गोरे हैं, हमारे पास डार्क स्किन के भी हैं, गांव के लोग भी हैं, हमारे पास हर किस्म के. आई थिंक वी नीड टू एम्ब्रेस आर एवरी कल्चर इन पाकिस्तान दैट वी हैव, ऑल फॉर प्रोविंसेस, जो कि नहीं है. ट्रू दैट, ट्रू And it दैट। doesn't stop at that. You have to, like, काफ़ी लोगों को बताया गया, like I was told that I don't have a face that will ever be a leading face because it comes round on screen. But I beat those facts as well. It's just because a lot of us weren't हर एक के पास इतना वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि वो अपना स्टैंड कर सकें ग्राउंड. A lot of girls, they have to earn, they have to be the breadwinners, and they have to make all the compromises to get they want to be. Yeah, actually, I speak a lot about this guy, but Elon Musk, I was watching one of his interviews and he spoke about this. Somebody asked him what is his thoughts on social media and specifically Instagram, and he's like, it's literally a killing machine for the future, because the thing is, you are showing people how happy you are. You are showing people how beautiful your life is. You're showing people how good looking you are by applying all of those fake filters. But you're actually not. Yeah, and like everybody's competing for attention. That's what social media is. Everybody's competing for let attention me give you an regularly. example. Let me give you an And that's example. what's sad, Yeah, let me give you an example. जैसे मेरी भतीजी 14 साल की उम्र से ना उसको काइली जेनर बहुत पसंद थी, और तब काइली जेनर बन चुकी थी विद ऑल द लिप फिलर्स एंड ऑल द सर्जरीज. तो वो कहती थी पप्पू ये कितनी प्यारी है, वो अपने आप को देखती रहती थी कि मे बी आई एम नॉट प्रिटी, सांवली और बहुत खूबसूरत है, शी लुक्स लाइक जानवी कपूर. बट मैंने रिशो कहा कि तुम्हें ये ऐसी इसकी शक्ल नहीं है. आई हैड टू गूगल हर ओल्ड इमेजेस एंड आई हैड टू शो हर कि इसने ये काम कराया हुआ है, इसने जॉ लाइन कराई हुई है, इसने नाक की सर्जरी कराई हुई है, इसने आँख उठवाई हुई है, इसने लिप फिलर्स कराए हुए हैं. शी वाज सो सरप्राइज कि थी वाकई में, क्योंकि एक 14 साल की लड़की को तो नहीं ना पता कि उसने क्या क्या कराया. शी एक्चुअली थॉट कि शी लुक्स लाइक दिस, और मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, बिल्कुल. हाँ, तो वहाँ से मुझे हुआ था कि नहीं, आई नीड टू लाइक ओपनली स्पीक अबाउट इट. आई रियली नीड टू ओपनली स्पीक अबाउट इट. You do. You totally do. You should make a YouTube video on this issue where you speak about it and you open up about it and you kind of expose the Yeah. factors that have gotten you to this point where some people are not accepting you from the industry, from the television industry.
Like it is like a ballsy move on your end, but it is something that's gonna end up helping a lot of people. And if you ever need any support, we're always here to promote that. Thank you so much. You I know? know that you guys are bad. Yes. Yeah. I mean, see, for me, it's like not an issue for me because I just said no to that project. Maybe they'll find somebody else. Maybe they won't find somebody else. But I know that I couldn't do it. I tried, but it just like it didn't sit right with me. और मुझे ये नहीं लगता कि ये क्या एक हुआ? इंजेक्शन से कोई फर्क भी पड़ जाना था जितनी मैं टैन होके आई हूँ. Yeah, but there's nothing wrong with that. मुझे That's कुछ what छत्तीस लगवाने पड़ने. हम लोग उस दिन भी यही बात कर रहे थे कि like I think one beauty is in the beholder of the eye. So ये Yeah. just it's subjective. हर कल्चर के अंदर ब्यूटी अलग अलग तरीकों से देखी जाती है. So for example, if you go to Latin America, वहाँ पे हम जैसे लोग हैं और वो लोग अलग तरीके से ब्यूटी देखते हैं. Africans they look at the beauty in another way. Chinese people, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं वो सारे Chinese एक जैसे दिखते हैं. Like, dude, they marry and they don't marry outside. There are very few Chinese people even in Canada. They're very very cultural and they don't go out of their culture. वो अपने culture के अंदर ही रहते हैं. Like आपको जैसा भी जो लगता है उनको वो पसंद है. But बात do you खत्म. know the amount of surgeries they get? I know, but they Have have. you seen the eyelid but they have surgeries yes, and yes, all yes, these yes. like little things? लेकिन like, वो they पता look क्या scary. लेकिन पता क्या है जोया वो जो eyes वाली surgery है ना that is kind of a need not a want क्योंकि their vision Eyelids. is getting limited because of their eyes being so squeaky and that's natural in them. So what happens is because my khala lived in China for Hong Kong for quite a long time, so that's how I know all of these things. She used to tell me that the Chinese people they would just get their Glue thing or lids cut up a bit yeah. and they take out the fat because they have some sort of a fat over there, so they just take out that fat and it just sticks right up and that's it. So that's a want, that's a need, not a want. You know what I mean? They need that. मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा फैट लगवा लेना चाहिए क्योंकि अम्मी कहती तुम अपनी आंखें बहुत खोलती हो उसकी वजह से तुम बहुत तेज लगती हो. तो मैं कहती हूँ अच्छा आप ठीक लग रही हो अम्मा आप ठीक लग रही हो. तो आंटी की आंखें भी ऐसी हैं. I saw the snap with your mom and I was like, oh, is she mad at me for opening up your snap? Like, what's going on, auntie? I'm sorry. Was I not supposed to open your daughter's snap? Because she was literally, Zoya was laying down, you're like a cute baby girl, and her Ammi was like this. I was like, oh shit, now I know. Yeah. अच्छा Cool, man. Cool. यही अम्मियों के साथ